So hello and welcome guys, this is Ashutosh and I welcome you all in this new video tutorial session of electrical machines. So today guys we are going to discuss some important interview and viva questions related to synchronous machine. So guys, let's start. So guys, basically first question आप यहाँ पर देख सकते हैं, you can see over here what are the differences between, you can see over here, between a cylindrical rotor of synchronous machine and salient pole rotor of synchronous machine. आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, ये cylindrical rotor है, okay, and the rotor is, the shape of rotor is cylindrical, okay, round shape. Okay, these are the field winding, rotor field winding, and these are also, you can see, the field winding, and it has uniform air gap, okay, along its periphery. You can see over here, and this is the salient pole rotor. इसको salient pole rotor कहा जाता है because guys, what happens here? Okay, these are the poles mounted on the rotor shaft. Okay, so we can mount from 6 to up to 40 poles on the rotor shaft. So these are the projected poles. Okay, so basically these are, and also there is a non-uniform air gap along the periphery of stator and rotor. Okay, so you can see that is why it is called non-cylindrical or salient pole rotor. So we will see the differences in this slide. आप यहाँ पर देख सकते हैं guys. The first difference you can see, salient pole rotors have large diameter and shorter axial length, but cylindrical rotor they are smaller in diameter but having longer axial length. So guys, we will see, you can see in this picture of, this is the real picture of stator of synchronous machine. Okay, this is salient pole synchronous generator, and these are the salient pole rotor. This is the salient pole rotor, as you can see over here. आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, this part is projected poles. Okay, these are the projected poles, and these are the field coils, field windings. These are, you can see, the field windings. So guys, यहाँ पर diameter is bigger, larger. आप देख सकते हैं यहाँ पर diameter बड़ा होता है, diameter is larger, and axial length, okay, जो shaft का length है वो छोटा होता है, axial length is smaller. Also you can see in the diagram, यह भी salient pole rotor का diagram picture है guys. Okay, and this is large hydro generator rotor, okay, with view of the vertical poles. So these are different number of poles. You can see over here, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे poles हैं. Okay, these are various poles mounted on the shaft. These are called projected poles. Also you can see over here, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं salient pole rotor structure. These are called field poles. Okay, और इसी में electromagnets will be formed on here. Okay, इसी में magnet बनता है, और these are the field coils. Okay, as you can see over here. Okay, these are the field coils. So diameter is large. Okay, but in case of cylindrical rotor, guys, you can see the axial length is larger. Okay, the axial length, you can see L equal to 10 meter here as per this pic. Okay, this is the larger, L equal to 10 meter, but the diameter D equal to only 1 meter, as you can see over here. So यहाँ पर diameter छोटा होता है और axial length बड़ी होती है guys. Okay, आप देख सकते हैं इसका real picture अगर आप देखें, this is the real picture of view of two pole round rotor generator and exciter. Okay, you can see over here, this is exciter and this is round rotor. Also you can see in another picture, this is the cylindrical rotor where axial length is larger. So guys, we will come to the next previous slide. So second difference, salient pole rotor, they are generally used in lower speed electrical machines. तो guys, इनका जो RPM जो speed होती है वो basically up to 600 RPM होती है. Okay, generally low speed RPM पर run करते हैं.
ओके एंड मोर नंबर ऑफ पोल्स इज रिक्वायर्ड टू अटेन द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर दिया गया है फ्रॉम 100 आरपीएम टू 1500 आरपीएम and more number of poles is required to attain the required frequency and typically number of salient poles is between 4 to 60. So guys ये vary होता है depending upon the the numerical value 4 to 60 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। बट इन केस ऑफ cylindrical rotor are used in high speed electrical machines usually 1500 rpm से लेकर अप टू 3000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज द सैलिएंट पोल रोटर एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल रोटर। सो यहां पर आप देखिए 2 पोल्स में इसकी स्पीड जो है 3600 आरपीएम रोटेशन पर मिनट एंड 1800 आरपीएम with 4 poles as you can see over here and direct conductor cooling using hydrogen or water as coolant and rating up to 2000 megavolt ampere. So guys आप यहाँ पर देख सकते हैं that is why it is called turbo generator because it runs at higher speed. So also you can see over here the next difference, the flux distribution is relatively poor than the non-salient pole rotor. Hence the generated EMF waveform is not as good as cylindrical rotor. So guys यहाँ पर जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिलेटिवली पुअर होता है और जिसके कारण से जो EMF का जो वेव फॉर्म है, जनरेटेड EMF की जो वेव फॉर्म है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं आ पाती है। बट in case of cylindrical rotor here there will be pure sinusoidal EMF generated waveform. And then you can see salient pole rotors generally need damper windings to prevent rotor oscillations during operation. तो salient pole rotor को start करने के लिए, self start करने के लिए और गाइस डैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर डैम्पर वाइंडिंग्स का यूज किया जाता है। ऑल्सो यू कैन सी salient pole synchronous generators are mostly used in hydroelectric power stations जो कि लो स्पीड alternators कहलाते हैं। सो गाइस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो अल्टरनेटर्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं गाइस इन केस ऑफ cylindrical rotor you can see here speed is much compared to salient pole rotor and windage loss as well as noise is less as compared to salient pole rotor क्योंकि इनका axial length बड़ा है, it has large axial length and small diameter so they can run at higher speeds and therefore windage loss will be less, also noise will be less and their construction is robust as compared to salient pole rotors and number of poles we can use here only 2 or 4. And damper windings are not needed in salient pole rotors। आप यहाँ पर देख सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग्स की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल रोटर्स होते हैं और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो साइनोसॉइडल होता है hence gives better EMF और जो जनरेटेड EMF का जो वेव फॉर्म होता है वो प्योर साइनोसॉइडल मिलता है। Also, non-salient pole or cylindrical rotors are used in nuclear gas thermal power plant and these are called turbo alternators. So guys, ये difference आप देख सकते हैं और ये आप पिक्चर देख सकते हैं salient pole rotor का diameters का बड़ा है, axial length छोटी है, these are the field windings. Also you can see this is the cylindrical rotor, these are called high speed or turbo generators, turbo alternators. आप यहां पर देख सकते हैं यूनिफॉर्म एयर गैप इज देयर बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, इसके बीच में ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एयर गैप। सो गाइस दिस इज स्टेटर एंड दिस इज रोटर and these are rotor windings, these are rotor slots and windings are placed in these slots you can see over here. So guys cylindrical rotor में केवल एक ही रिएक्टेंस होता है synchronous reactance, that is called synchronous reactance, but here in case of salient pole alternator this is actually salient pole alternator. So uniform so there is a non-uniform air gap is there actually. So guys there is one important thing in this
related to speed and pole relationship, you know कि country to country it depends, the value of frequency is different, okay. According to countries, basically in India we take 50 hertz, that is our standard generating frequency. So guys, जैसे इंडिया में जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो सकता है कि ये एज पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से हो जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वहां पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ली जाती है जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है. सो गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस पिक, हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n इक्वल टू, आप लिखते हैं, यू कैन राइट इट डाउन 120f अपॉन p, वेयर n इज द स्पीड of alternator, okay, and frequency f is the frequency generating frequency, p is number of poles, so you can write the frequency equal to pn upon 120, pn upon 120. So guys, अगर आपने number of poles 2 select किया है for round shape or cylindrical rotor alternator, so it will be multiplied by 3000 rpm, which is the maximum speed, okay, in our country India, डिवाइड बाय 120. सो बेसिकली गाइज ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के साथ इसमें आएगी. और अगर आपने 4 यहां पर रखते हैं, इफ यू पुट 4, नंबर ऑफ पोल्स आर इक्वल टू 4, सो यू विल हैव टू सेलेक्ट 1500 आरपीएम एंड देन for 1500 multiplied by 4 it becomes, okay, another 50 hertz will come, okay, so the same answer will come. Okay, so this is the combination selected in India and as per the pic, ये आप देख सकते हैं guys, यहाँ पर हमारे यहाँ 3000 RPM ली जाती है with 2 poles and 1500 RPM ली जाती है with 4 poles. So guys, ये वाली पिक जो मैंने ली है, हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या दूसरे कंट्री के हिसाब से हो. Okay guys, so now we will take the